It's been a while. Mm. So, all right. So, hi, everyone knows a little about me now to Dr. Sar. So, मैं बेसिक उन्होंने सब कुछ बता दिया है. तो मेरी बेसिकली जो रिसर्च है वो रीजनरेशन पे बेस करती है फ्रॉम द लास्ट 7 years. So, basically regenerative dentistry. Because I'm a dentist, so today we are going to talk about exosomes, जो कि मुझे 2 साल पहले तक बिल्कुल आइडिया नहीं था कि what is the meaning of exosome, and I will not be surprised if most of you don't know what are exosomes. So exosomes, I can tell you, it is kind of liquid gold in dentistry. It is established in medicine that it is a very, very crucial component of regeneration. But in dentistry, dentists are, like most of the dentists I give lectures in USA, they are not aware of the applications of exosome and its potential. So today I will give you some brief introduction, some lab techniques, how to use exosomes in research, how to maybe write some papers if you have some good ideas on exosomes, and how to maybe some formulate some uh, research projects based on exosomes in regenerative dentistry. So today we are going to talk about, let me, yeah. Today we will go from introduction, then we will move towards isolation of exosomes, Sorry, Paras, characterization can of, you go in the presentation mode? It's still in the uh, presentation mode में चले जाओ कि वो bottom right पे जो button है या फिर ऊपर okay, correct. yeah, Thank you. Sorry. yeah, okay. So we will start with the introduction, isolation methods of exosomes, characterization, and I will show you some of our teams as well as some other top researchers' preclinical and clinical outcomes. And in the end, I will just give you a small, small touch of medical applications of exosomes. Okay, so this is just a small introduction of exosomes. So what basically are exosomes? Exosomes are small extracellular vesicles which are released from the cell. And you can say almost every type of cell. So most of the time, uh, when they are released, their main function is cell-to-cell communication. So when an exosome is released from the cell, it is targeted towards another cell. And when it reaches the other cell, it attaches to the surface receptor of that cell, and it is endocytosed in that cell, and it performs various functions depending on its origin cell and the target cell. So a brief history, if you start from the left side of the top figure, in 1983 and 1985, between that, these vesicles, I will say small extracellular vesicles to exosomes, because these basically are vesicles that were discovered in sheep reticulocytes. And at that time, when they were basically identified, they were found or they were considered to be a waste material of a cell, and cell just exclude those vesicles out of themselves so that they can get rid of like surplus proteins or RNAs or any junk food, or not food, I mean the food for the cell. They were considered junk, or uh, like the debris of the cell. So in 1987, the scientists found that these cells are basically involved in cell-to-cell mediation or communication. And these are not only a garbage of the cell. So from 1987 until 1996, work was being done on them. But the main thing came out in the scientific world when in 1996, exosomes were shown to present antigens.
so which is called MHC complex, major histocompatibility complex. So it means they are involved in immune regulation as well, not only cell to cell regulation, but also they are involved in immune regulation. So let me remind you, if some of you people don't know, if you want regeneration of any organ, tissue, or any bone, there should be anti-inflammatory effect. Without reducing the inflammation, you cannot proceed to regeneration. So that's how in 1996 exosomes became, came in limelight. Okay, in 2007. So this year is very special for me because discovery of RNAs happened uh, via exosomes. It means that exosomes contain some messenger and microRNAs in themselves, and they transfer these RNAs to other cells, and they are involved in this all transcription and translation activities as well. And why it is this 2007 is special, because this discovery was made by one of my mentors, whose name is Dr. Jan Lotwall. He is in University of Gothenburg, Sweden, and I have been working with him over the last 8 months. So he and his lab discovered that exosomes have RNAs, different kind of RNAs. Okay, after that in 2010 to 2013, role in metastasis was identified. After that, in 2014, myself, these basically are the guidelines that, okay, if you are writing a paper or if you are carrying out any scientific project based on exosomes or extracellular vesicles, you should have these standards in your project, like what steps need to be followed. And these are the guidelines. Again, my mentor is one of the leading author in these guidelines. In 2015, exosomes were important because they were being used in liquid biopsy for the diagnostic purposes. And in 2018, now they are being regularly after that as therapeutic and drug delivery systems, as well as engineered exosomes are also being used for regenerative dentistry and medicine. So on the bottom left, you can see that is a kind of a, illustration of exosome. अगर आप देखें, it is a bilayered lipid structure, and there are some different kind of molecules on the surface. It has some cytoskeletal proteins, it has some enzymes, different kind of RNAs. You can see messenger, micro, long non-coding RNAs. It has cholesterol, ceramide, and other lipids on the membrane, as well as some signal transduction molecules. And you can see the applications of basically the signaling pathways that exosomes can regulate are basically metabolic regulation, host microbiome interaction, cell migration, metastasis, waste management, all of these. The list goes on and on, but we will focus basically in dentistry. So this is a small illustration that how exosomes are produced. So for instance, an exosome, it is entered into the cell internalization that is called, and it goes through different kind of mechanisms and steps before it is properly ingested, and then it is again excluded from the cell. So the most important and most difficult thing in exosome research is how we can extract or isolate exosomes from any biofluid or from any cell or from anything that we are basically focused on. There are different kind of methods. I can like name 20 of them, but maybe 17 of them people don't use because they are very they have some limitations. They are expensive, they require some expertise of a professional lab technicians, or but the most commonly used isolation method in dentistry is differential ultracentrifugation. So why it is called differential? Because it
has some sequential steps. So first of all, from where exosomes come? So this is kind of a lab question that people ask from me in lab, not during the clinical, I mean, work. So how, if someone asks me, Dr. Paras, how we can isolate, how we can have exosomes from anything that you think is important in regenerative dentistry. So what we do, exosomes are present inside the cell. If I'm using, or if you are using any cell, for example, periodontal ligament stem cells. So what we will do, we will culture periodontal ligament stem cells in our cell culture lab. And when they grow, when they are confluent, basically when they are 80 to 90% attached to each other in the petri dish or wells or plates, what we do, we replace. So there is a medium that is called growth medium of cell. So we will replace that food, that growth medium of those cells with another kind of medium that does not have enough nutrition. And what it will do to the cells, cells will be under stress because they are not getting enough food. So when the cells are under stress, they start to release or secrete exosomes into the medium that is called the cell culture medium or growth medium. So we wait from 24 hours to 48 hours for this procedure that the cells are secreting exosomes. And when after 24 to 48 hours, we are sure that, okay, the exosomes have been released to the maximum into from the cell into the cell culture medium. So then we just take out that cell culture medium or growth medium, and then we put in, depending on the amount of, like the milliliters of the cell culture medium, we put in falcon tube. So if you see this first step, so this is just the cell growth medium or culture medium inside that. So first step is we centrifuge this at 300 Gs for 10 minutes at 4 degrees. And it will pellet the cells and cell debris. Then we will just take out again the supernatant, and the next step is centrifugation at 2000 for 20 minutes at 4 degree. So this will pellet dead cells and large debris and apoptotic body that is also a kind of extracellular vesicle, but larger than exosomes. Then we will take again the supernatant and centrifuge at 10,000 Gs for 30 minutes to exclude. Oh, it seems like we lost Paras. Yep, hello? हाँ, where are you? किधर चले गए? My, your screen is we cannot see your screen. हाँ, somehow it got disconnected, यार. It was not from my side. अच्छा अच्छा अच्छा. देखो देखो Yeah, yeah, देखो. yeah. Okay, so now you can see. Yes, 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 yes. Okay, so where I was, because I was, मैं इधर ही था कब 10,000 से. G. 10,000 G पे थे. Oh, okay. So okay. So after 2000 Gs, we go to Iram, we will take 10,000. your question once he finishes the slide. Iram, you can ask a question. सही है. उसके बाद. Okay. So after 10,000 Gs, we go to ultracentrifugation. That is not a normal centrifuge. That is a very high-end ultracentrifuge. So you can see around 100,000 Gs for 70 minutes to exclude small EVs that are also called exosomes. So here you have the exosome pellet. Now what you will do, you will just add PBS into this pellet of exosomes and wash again at 10,000, 100,000 Gs. And then in the end, you will have purified small extracellular vesicles. So this pellet you can resuspend in PBS or you can resuspend in saline solution. And you can put this in -80 or even in -20 degrees. So this is how you extract exosomes from cells. So the question, I think the question you may ask now.
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। नंबर वन के एक्सोसोम की क्या लाइफ स्पैन भी है कि इतनी है और इतने डेज तक, इतने मंथ्स तक। नंबर टू कि अगर हम एक्सोसोम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक पेशेंट के प्लाज्मा से, तो क्या वो हम उसी में ही यूज़ कर सकते हैं या हम दूसरे पेशेंट में भी यूज़ करते हैं? लाइक जैसे ब्लड हम होता है ना कि ओ नेगेटिव है, ओ या पॉजिटिव है, या इस तरह की चीज़ें क्या इसमें भी हैं? वेरी 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 गुड क्वेश्चन एट दिस लेवल। ये कोई अगर मुझसे पोस्ट डॉक पूछता तो आई वॉज नॉट सरप्राइज, बट वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले, यस, एक्सोसोम्स की हाफ लाइफ कह लें या उसकी आप टाइम पॉइंट कह लें, होती है। लेकिन वो डिपेंड करती है कि आप उनको स्टोर किस कंडीशन में कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ स्टडी जिसने कंपेयर किया कि जब आपने एक्सोसोम को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम उसकी आइसोलेशन के बाद स्टार्ट होती है, नॉट व्हेन इट इज ऑलरेडी इनसाइड द सेल और एनी कल्चर मीडियम। सो व्हेन यू आइसोलेट एक्सोसोम, एक्सोसोम या तो आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें and they will degrade within 1 hour. Okay, then, but obviously no one does that. So या तो आप उनको -4 डिग्रीज में स्टोर करें, एट लीस्ट -4 पे, या फिर -20 पे। लेकिन जो आइडियल सिनेरियो है वो है -80 डिग्री सेल्सियस। इफ यू स्टोर एट -80, तो मैंने अपनी जो सीनियर से भी पूछा और जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, आप 2 साल तक एक्सोसोम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं एक्सोसोम्स को, अगर वो -80 पे हैं। लेकिन अगर -20 पे हैं तो ऑब्वियसली उनका टाइम डिक्रीज हो जाता है, उनकी जो एफिशिएंसी और जो भी उनके अंदर जो प्रोटीन है बेसिकली वो डिग्रेड हो जाते हैं, या जो भी आरएनए है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि यस, जो आप किसी भी पेशेंट के किसी भी सेल से, किसी भी बायोफ्लूइड से, प्लाज्मा, सलाइवा, यूरिन, या किसी भी सेल से, बोन मैरो स्टेम सेल हो गए या उसके डेंटल स्टेम सेल्स हो गए या मैक्रोफेजिस, किसी भी आप पेशेंट के एक्सोसोम्स दूसरे पेशेंट में यूज कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल थेरेपी and exosomes, because exosomes are cell free therapy. They are not like, उनमें कोई immunogenicity, उनमें कोई rejection, और उसमें कोई reaction, inflammatory reaction. This is the significance of exosome, that you can utilize even the cancerous patient exosomes. First you have to do some quality checks, and then you can use same exosomes in other patient, but ideally obviously healthy to healthy. Okay, so I hope. Okay, so next, so सर, yeah, सॉरी yeah, सॉरी सर, वन yeah, क्वेश्चन, वन yeah, yeah, वन क्वेश्चन मोर। सर, आपने कहा कि 2 years तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? yes, और अगर हम इसको यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद ये क्या मतलब अगर इनकी लाइफ स्पैन इतनी है, या अगर वो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, तो क्या उसका बॉडी पे कोई इम्पैक्ट होता है? या जो जिन yes, सेल को ये रीजनरेट करते हैं, उन पे yes, कोई फिर इनका इम्पैक्ट पड़ता है? yes। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने दो दो यूज तीन यूजेस है ना, या तो आपने एक्सोसोम्स को इन विट्रो मेथड में यूज करना है, या आपने एनिमल मॉडल्स में, या क्लिनिकल यूज ह्यूमन ट्रायल्स। सो इट डिपेंड्स कि आप अगर इन विट्रो या इन विवो यूज कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा आप मतलब क्वालिटी चेक नहीं करेंगे कि ये जो हमने 2 साल से एक्सोसोम स्टोर किए हुए हैं, आप डायरेक्टली सेल्स को दे देते हैं इन विट्रो में, और उसके बाद आप एनिमल मॉडल पे, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना खतरा नहीं होता। लेकिन जब आप, हाँ, उसका इफेक्ट ये होगा कि अगर वो, फॉर एग्जांपल, 2 साल पुराने एक्सोसोम्स और एक फ्रेश एक्सोसोम का रीजनरेटिव पोटेंशियल बहुत डिफरेंस होगा। जो आपके फ्रेश एक्सोसोम है उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए और डीएनएज और सब कुछ ऑब्वियसली विदाउट डिग्रेडेशन होंगे। लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ आरएनएज हैं जो कि -80 पे भी डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, इनसाइड द एक्सोसोम्स। तो उसका तरीका ये है कि आप प्रोटीएज इनहिबिटर्स डाल देते हो जब आप उनको स्टोर करने लगते हो। उनसे 100% प्रोटीन्स तो नहीं डिग्रेडेशन से बच सकते, लेकिन
फिर भी दे आर बेटर देन अगर आप ना डालें उसमें प्रोटीएस इनहिबिटर। अब उसके बाद रही बात क्लिनिकल स्टडीज की, अगर आपने उन एक्सोसोम्स को क्लिनिकल यूज करना है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले उनको एक्सट्रैक्ट करोगे और उनकी सारी मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन चेक करेंगे, जो कि अगली इस ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेक करते हैं। फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट कंपनीज में उनके अपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उसमें प्योरिटी चेक करते हैं एक्सोसोम की। वो एक स्टैंडर्ड होता है, अगर स्टैंडर्ड से नीचे प्योरिटी है तो वो आप उसको क्लिनिकल यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स में यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वो प्योरिटी मीट कर रही है तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर लेते हैं। So in short, preclinical studies may it doesn't matter. Only thing is that you need maximum regeneration. So it depends on how old or how fresh are the exosome. But in clinical, there is yes or no. Exosomes are pure, safe, and quality control. Okay, doesn't matter. It is 6 months old or 2 months, 2 years old. Paras, Samia has also a question. Samia, you want to Yep. ask the question, please? Yep. जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने शुरू में बताया कि ये रेटिकुलोसाइट से सिक्रीट होते हैं एक्सोसोम्स, Okay. ठीक है? This. तो Yep. अब हाँ हाँ, तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि फिर दे आर टेकन अप बाय विच सेल्स, यानी जो हमारे टारगेटेड सेल्स हैं या जिसको हम रीजनरेट कराना चाह रहे हैं, तो फोकस थेरेपी होती है जैसे लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी टाइप करते हैं, या जनरली दे आर टेकन अप बाय द सेल्स? Okay. So first of all, reticulocyte is just the first type of cells from where they were identified. मैं आपको डेंटल एग्जांपल देता हूँ जो मैंने खुद ऑब्वियसली बाय हैंड किया हुआ है। बेसिकली मैंने पेरिडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स आइसोलेट किए, सॉरी एक्सोसोम्स फ्रॉम पीडीएल स्टेम सेल्स आइसोलेट किए। और जो आइडियल सिनेरियो है वो ये है कि जो आपका सोर्स है ना, सोर्स सेल है एक्सोसोम का, वही आप वहीं पे अगर एक्सोसोम्स को टारगेट भी बनाएं तो उसका जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल आप एडिपोज टिश्यू डिराइव्ड स्टेम सेल्स से जो एक्सोसोम्स हैं वो निकालें और उसको आप पेरिडोंटल लिगामेंट या एल्वियोलर बोन लॉस की रीजनरेशन के लिए यूज़ करें। सो यू कैन यूज़ दैट। और वो कैसे यूज़ करते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपने एक्सोसोम निकाले फ्रॉम एडिपोज टिश्यू स्टेम सेल्स, राइट? वो एक्सोसोम आप ऑब्वियसली डाल सकते हैं पेरिडोंटल पीडीएल की जो रीजनरेशन है। वो किस तरह डालेंगे? आप कोई एक स्कैफोल्ड लेंगे या हाइड्रोजेल लेंगे या कोई भी कैरियर सिस्टम लेंगे, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट रिच फाइब्रिन ले लिया या कोलाजन ले लिया जो भी हम यूज़ करते हैं पेरियो में। उसको सोक करेंगे विद एक्सोसोम्स, ठीक है? और उसको फिर एज ग्राफ्ट उसको आप सील कर देंगे और उसके बाद उसकी रीजनरेशन जो भी उस एक्सोसोम ने करना होगा वो उस टारगेटेड एरिया में कर लेगा। लेकिन एज कंपेयर टू दैट अगर आप पीडीएल स्टेम सेल एक्सोसोम्स को यही करें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टारगेटेड है। दे नो व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग एंड signaling pathways and immune system and everything in that region. So they are more targeted as compared to general exosomes. Okay. सो आफ्टर आइसोलेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमने देखना है कि हमने जो चीज़ आइसोलेट की है वो वाकई एक्सोसोम है या कि कंटेमिनेशन है, ठीक है? उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। दीज मेथड्स टीईएम, सेम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एनटीए, फ्लो साइटोमेट्री, डीएलएस, एसपीआर, रमन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिंग, मैस स्पेक, एलाइजर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब मैं आपको इनके पर्पस बताता हूँ कि कौन सी जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ होती है। टीईएम बेसिकली आपकी जो एक्सोसोम है उसकी मॉर्फोलॉजी, बेसिकली स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ होती है। और व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ एक्सोसोम? इट कैन वेरी बिटवीन 30 नैनोमीटर टू 150 नैनोमीटर। उसके बाद सेम atomic force microscopy is also structural morphology, NTA. So these red ones, ये जो red labeled हैं ये mostly used techniques हैं। और ये 4 टेक्निक्स हैं जो कि जो गाइडलाइन एक्सोसोम की जो मैंने आपको पहले बताई थी
वो कहती हैं कि इन 4 को एट लीस्ट फॉलो किया जाए to validate that the things that you have isolated, they are really exosomes. So NTA, nanoparticle tracking system, is that what is the number of uh, the exosomes in a given amount of liquid, or they also measure the size of the exosomes. Flow cytometry, so there are some surface markers on the surface of exosomes. For example, CD9, CD63, CD81. So flow cytometry से हम उसको measure करते हैं कि are these markers present on the surface or not. DLS, again another SPR, another structural. Raman is the composition, obviously. Electromagnetic sensing is also kind of magnetic based sensing of exosome surface markers. What is mass spectrometry? So if अगर आप मुझसे पूछे ना, इन सारों में से सबसे जो valid और सबसे efficient technique है, वो है mass spectrometry. Why? First of all, it is very high end. और ये जितनी भी टेक्निक्स है ना अदर देन मैस स्पेक, ये आपको बताती हैं कि यस दिस इज एक्सोसोम, either through the surface markers, presence of surface markers, or through the morphology or size of the exosome. लेकिन ये कोई भी नहीं बताता इन टेक्निक में कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दीज एक्सोसोम्स, कि एक्सोसोम्स के अंदर है क्या. ठीक है, वो मैस स्पेक से करते हैं. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली प्रोटीन्स की अमाउंट, उनकी number of proteins and amount of proteins, which is also known as abundance of proteins, measure करती है. So exosome को आपने प्रिपेयर किया, मैस स्पेक मशीन में डाला, और वो आपको मैस स्पेक लिस्ट ऑफ एक्सोसोमल प्रोटीन्स दे देगी कि ये एक्सोसोम आपके ये प्रोटीन आपके एक्सोसोम में मौजूद है. So this is called mass spec. ELISA, again, you know that which proteins or which surface markers are present in exosome, so you will just do those antibody based ELISA to just confirm that these surface markers are present. Western blotting, again, you will see the bands of like CD9, CD63 and CD81, the typical exosome surface markers. So this is how exosomes induce osteogenic differentiation. लेफ्ट साइड पे जो आपके फिगर है, पैनल ए, बी और सी, ये इन विट्रो है. सो दीज एक्सोसोम, सो व्हाट हमने किया क्या था इसमें, कंट्रोल ग्रुप बेसिकली ओनली पेरिडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स. ओके, इफ यू सी ARS, मैं आपको इस तरह बताता हूँ. ARS is alizarin red staining. Okay, it is the mineralization assay to check the osteogenesis. So this control is only periodontal ligament stem cells. Okay, so what is this? This is 50 microgram per ml of PDL stem cell exosomes, and this is higher concentration, that is 100 microgram per ml. और आप देख सकते हैं कि कंट्रोल से कंपैरिजन करें तो 50 ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम 100 माइक्रोग्राम तक चले जाते हैं कंसंट्रेशन में, तो इट इज़ सिग्निफिकेंटली higher osteogenic potential as compared to the control. Same thing if you see AKP. AKP is alkaline phosphatase. It is same. There is no significant difference between control group and 50 microgram per ml of exos, but obviously there is a significant difference when we used 100 microgram per ml of exosomes from PDL stem cells. This is just like 1x magnification, and this is I think 10x magnification, yes, of the same assay, and this is the semi-quantitative. So this is just a small experiment, that these two experiments, alizarin red and alkaline phosphatase, how they show the osteogenic activity of control and exosome treatment. So if you go to animal in vivo models, you will see यहाँ
और investigators ने basically जो macrophage inflammatory basically macrophage हैं उनसे exosome निकाले हैं, ठीक है, और उनको लोड किया मेलाटोनिन से, और उसके बाद उन्होंने लाइगेचर इंड्यूस्ड पेरियोडोंटाइटिस मॉडल में उसको इंजेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने माइक्रोसीटी के थ्रू हिस्टो एग्जामिनेशन की to check the bone loss, fiber destruction, and osteoclastic activity. And in short, I will tell you that they found that the inflammation decreased with the M2 derived exos, as you can see in this after 48 hours and almost 72 hours. This is almost over. But if you see the difference at 48 hours, you can see that the inflammation is reduced significantly in these M2 exosomes loaded melatonin basically treated exosomes. So there are, I think, more than 500 different types of exosomes and treatments and their concentration that you can have, available in the literature. But this is just a small example of, because if I give all the examples of the papers, it will take 1 week at least. Okay, so this is my postdoc work. Same thing, we derived exosomes from periodontal ligament stem cells, and we treated these exosomes with bone marrow stem cells. अच्छा, ये जो पैनल है वो अल्कलीन phosphatase activity है, right? And you can see that 1 to 10 dilution basically is highest concentration of periosomes. PX is periosome, so BMSE is the control group. And you can see कि जो इनके results हैं वो periosome के obviously significantly greater as compared to the control group. Even BMP2, I use BMP2 as a positive control. So BMP2 से भी ज़्यादा osteogenic activity was found for all different dilutions of periosomes. Same results were found on the mineralization assay, that is alizarin red. You can see these also microscopic pictures, and this is collagen activity. Basically, it is also ECM deposition is one of the integral part of regeneration. So collagen activity showed the same results that we found in the above two osteogenic assays. So on the right side, these are the PCR results and ELISA result as well of the same osteogenic markers like ALP, alkaline phosphatase, RUNX2. So these are bone markers, OCN, osteocalcin, and osteopontin. So you can see same trend that with the usage of periosomes, regardless of the concentration, the osteogenic differentiation was significantly higher as compared to growth, as compared to the control, as well as BMP2 treated bone marrow stem cells. So these are all figures ये हमने हमारी टीम की हैं. जो हमारा पेरिडोंटिस्ट है वो बेसिकली फ्लोरिडा में होते हैं और न्यूयॉर्क में होते हैं. वो केसेस करते हैं and then we start extracting the data, tabulation, and then analyzing and writing. So this is basically same exosomes, periodontal ligament stem cells derived exosomes we used for our patients. Panel A, as you can see, the probing depth and all these we checked. And after that, if you see this, we used like a collagen membrane, and then we soaked the collagen membrane with these exosomes. And you can see that this depth recession that has been, gingiva has been restored to its, at least not to its ideal position, but much better than pre-treatment. Same thing, you can see gingival recession here. We perform same treatment again, and you can see the difference here in the C panel. And these all are after 6 months of follow-up. Panel 3 as well as shows same thing. You can see much significant difference pre-treatment and 6 months post-treatment. Another patient, different kind of location of the defect, and you can see the difference here.
So these are all after 6 month follow-up. एंड दिस ये पहली स्टडी है जो हमने क्लिनिकल परफॉर्म की है यूएसए में, पब्लिश्ड भी है। और ये भी फर्स्ट क्लिनिकल स्टडी, बट it is gingival recession, another kind of study in different location, but same with the parameters, with the analysis. You can see there is a much significant difference between. And another thing is, I think this is also 6 month. Yes, so this is the baseline and this is 6 month follow-up. And I think if we go to at least 1 year follow-up with another treatment, like another dose of exosome, we will find that uh, it will be even much better as compared to 6 month follow-up. So here we measure different things like attached gain, keratinized tissue, recession depth, recession width, and mean root coverage, different kind of clinical and radiographic parameters. So Sorry, Paras. Iram, you want to ask your question? जी सर। जी Yeah. सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये जो सर ने बताया है कि हम रीजनरेट करते हैं, तो क्या है कि हाउ मच, जैसे होता है ना कि स्क्वायर एरिया है उसके लिए इतनी ml कंसंट्रेशन चाहिए एक्सोसोम की। एक तो मुझे ये पूछना है। दूसरी चीज़ ये पूछनी है कि अगर हम एक्सोसोम थेरेपी से रीजनरेट करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर जो भी हमने पीडीएल है या कोई भी जो रीजनरेट की है, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग मतलब के लिए है, या जैसे करवाते हैं कि हम हर 6 मंथ बाद दोबारा से हमें करवानी है एक्सोसोम थेरेपी, या 1 ईयर के बाद करवानी है? तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें प्लीज। I think okay. most of the questions that are coming up for Iram are probably in your presentation, and by the end, you might get answered. But Paras, you can answer her. मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगेन गुड क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जो आपने ट्रीटमेंट किया है, फॉर इंस्टेंस आपने ये ट्रीटमेंट किया है, इसका जिंजवल ग्राफ्ट आपने लगाए हैं, और उसके बाद आपने हीलिंग देखी है और सब कुछ ओके है, और ये रिजल्ट आपके सामने 6 महीने। इसके बाद ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल हीलिंग हुई है, नेचुरल रीजनरेशन हुई है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल या टाइम बीइंग नहीं होता। हाँ, इसके बाद अगर पेशेंट दोबारा उन्हीं हैबिट्स पे चला जाए जो कि ट्रीटमेंट से पहले था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ एट द फर्स्ट प्लेस, तो ऑब्वियसली एक्सोसोम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज ऑल नेचुरल। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर ओरल हाइजीन, इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग और रिज्यूम स्मोकिंग, तो अगेन सेम यही होगा। लेकिन इसका एक ड्यूरेशन नहीं होता कि एक्सोसोम जो है, हाँ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने करवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक इनको हमने सिर्फ 2 दफ़ा बुलाया था एट बेसलाइन ट्रीटमेंट के लिए और आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। इन 2 टाइम पॉइंट्स हमने इनको ट्रीट किया था एक्सोसोम से, 3 मंथ्स के बाद नहीं किया, और ये उसके बाद करना भी नहीं पड़ता क्योंकि हीलिंग हो गई है। वो हीलिंग तभी खराब होगी या इन्फ्लेमेशन दोबारा तभी होगी जब आप अपनी कोई हैबिट्स इस तरह की दोबारा स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट बट क्वेश्चन सर आप, व्हाट अबाउट द सिस्टमिक हेल्थ? अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो डायबिटीज, जाहिर सी बात है वो फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, या तो उस चीज़ में उस हीलिंग पीरियड के दौरान अगर इस तरह के इसको सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो फिर वो इफेक्ट होगा? अफेक्ट होगा। उसका यही हम गाइड करते हैं कि आपने अपनी जो हीमोग्लोबिन लेवल है, सॉरी HB1AC, जो आपका इंसुलिन सारा कुछ है, उसको आपने कंट्रोल में रखना है। आपने रेगुलेटेड जो है ना आपकी डाइट है और आपकी रेगुलेटेड जो थेरेपी है वो आपने कंटिन्यू करनी है एटलीस्ट ड्यूरिंग द थेरेपी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और उसके बाद भी ऑब्वियसली नॉर्मली यही होता है कि आप जो आपका इंसुलिन लेवल है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल, जो वो सब कुछ आप मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो अगर आप दोबारा से शूट करेगा तो वो ऑब्वियसली सिर्फ दांतों पे नहीं, वो हर जगह आपकी हीलिंग पे, जहां भी कोई भी हीलिंग है वो अफेक्ट करेगी। तो एक्सोसोम जो है वो आपको आपकी डायबिटीज ट्रीट नहीं कर रहे, वो आपकी ये इंडिकेशन जो आपकी आपकी जो ट्रीटमेंट टारगेटेड ट्रीटमेंट है वो ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने डायबिटीज ट्रीट करनी है
तो वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि वो एक्सोसोम मेडिकल में किस तरह ट्रीट हो रहे हैं, कर रहे हैं। नो सर, मैं ये नहीं कह रही कि डायबिटीज ट्रीट करनी है, बट मैं ये पूछ रही थी कि अगर सिस्टमिक हेल्थ है इफेक्ट होती है तो क्या हीलिंग पीरियड के दौरान उसका एक्सोसोम थेरेपी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं ये क्लियर करना चाह रही थी। ऑब्वियसली वो आइडियल उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी एक्सोसोम की, अगर आप एज कंपेयर टू आप हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली एक्सोसोम विल बी इफेक्टिव, बट इफ़ यू हैव एनी सिस्टेमिक कंडीशन तो आपको फिर वो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, जो आपकी डायबिटीज़ है या आपको जो भी उससे रिलेटेड सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन है, वो आप उसको एक विद इन नॉर्मल रेंज रखेंगे, और उस दौरान आपकी एक्सोसोम थेरेपी देन 100% इफेक्टिव होगी, या कोई भी थेरेपी उस दौरान इफेक्टिव होगी। Samia, you have also a question. Please go ahead. सर बस मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि ऑब्वियसली फिर तो हम केस सिलेक्शन पे जाएंगे ना, अगर कोई सिस्टेमिक या डायबिटिक या इस तरह के हैं कि फेलियर के चांसेस होंगे तो हम उनको चूज ही नहीं करेंगे इस केस के Yeah, लिए। I think Yes. I think the scenario, these kind of regenerative therapies, say implant में case selection is very important. So periodontal regeneration में भी, case selection is absolutely critical. So मेरा ख्याल से पारस वो डिग्री है ना? ये 100% हम ऐसे केस को लेंगे ही फाइनल में, जब मतलब हमारे पास कोई हेल्दी या लेस कॉम्प्लिकेटेड केस हाँ, नहीं है। अच्छा। तो ये आइडियल सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, वो हेल्दी पेशेंट ऑब्वियसली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि सिस्टेमिकली हेल्दी है, या एटलीस्ट जो कि कंट्रोल कर सकता है अपनी, फॉर इंस्टेंस स्मोकिंग फॉर सम टाइम। ओके, सो अब थोड़ा सा ओवरव्यू एक्सोसोम इन मेडिसिन। सो दिस इज, ये एक डायबिटिक पेशेंट को वूंड हुआ था टेम्पोरोपेराइटल रीजन पे, एंड यू कैन सी दैट the investigators they derived exosomes from blood, और फिर उन्होंने ट्रीट किया। ये प्री ट्रीटमेंट है लेफ्ट साइड पे। 4 वीक के बाद, 6 वीक के बाद, 26 वीक, 27 वीक, एंड आफ्टर 45 वीक्स यू कैन सी that this wound that was because of diabetes, it has been almost finished in less than 1 year. So this is the application of exosome from blood in diabetic wound healing. और ये जो है आपकी aesthetics में 72-year-old female treated with carbon dioxide laser followed by topical PRP, and PRP derived exosomes on the right side 4 years apart. ये आप चेक कर सकते हैं कितना डिफरेंस है 4 years अपार्ट में इन एस्थेटिक मेडिसन। ये डॉग बाइट है बेसिकली, 14 years old फीमेल को डॉग बाइट हुई, लेफ्ट साइड पे प्री ट्रीटमेंट है। उसके बाद उन्होंने यूज़ किए बेसिकली अगेन सेम एस्थेटिक के लिए, उन्होंने PRP डिराइव्ड एक्सोसोम यूज़ किए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डिराइव्ड, और आफ्टर 10 days you can see the significant improvement in the wound. ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का एक पेशेंट था, 16-year-old मेल, उनको टॉपिकल एक्सोसोम लगाए। ये कंपनी प्रोड्यूस्ड एक्सोसोम थे, आई थिंक दे आर आल्सो फ्रॉम PRP derived exosome, and you can see the difference at day 2, day 4, and day 6. Topical treatment only, not systemic or something. So this is the miracles exosomes are performing in medicine, but in dentistry लोगों को भी इतना आइडिया नहीं है। जो डेंटिस्ट हैं वो ज़रा हेजिटेंट होते हैं नई ट्रीटमेंट के, क्योंकि उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रही है, वो स्टेटस को ना चेंज नहीं करना चाहते। ओके, ये था डायबिटिक फुट अल्सर। बेसिकली ये इसमें मेरे ख्याल में आफ्टर 1 month, so again same for aesthetics, or you can say wound, PRP derived exosomes they used, and they can derive it from any and blood from anywhere, like same thing, blood plasma. So you can see case 1, case 2 again significantly improved, case 3 almost healed, case 4 much difference after 1 month, and only 3
3 treatments during that 1 month of exosomes, not every day like medicines or injections. So you can see ये एक केस था बेसिकली एम्पुटेशन का. इस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये एम्पुटेशन के लिए रेफर हो गया था केस 5. ये देख सकते हैं आप. तो उन्होंने एक्सोसोम्स को यूज़ किया और एम्पुटेशन तो दूर की बात है, ये बिल्कुल ठीक हो गया था. ऑब्वियसली आफ्टर 3 मंथ्स इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ की फॉलोअप स्टडी थी. ये ट्रॉमेटिक अल्सर है जिसने एक्सपोज कर दिया था आपके मसल्स को, स्कल के और बोन को. टॉपिकल एक्सोसोम्स ये अगेन 3 सेशंस और 26 डेज के बाद आप देख सकते हैं वूंड एरिया में कितना सिग्निफिकेंस डिक्रीज आया. और आप देखिए ये एज 79 ईयर ओल्ड मैन है जिसमें हीलिंग एज कंपेयर टू स्लो होती है. एंड I don't know its systemic condition, इसमें डायबिटीज़ थी या नहीं, but you can see the significant difference in 26 days after 3 sessions of exosomes. Acne vulgaris, intralesional injection, ये plant exosomes है. Basically ये रोज stem cell derived exosomes होते हैं, जो प्लांट ज़्यादातर होते हैं. रोज स्टेम सेल से आप एक्सोसोम डिराइव करते हैं और आपने 1 पर मंथ इसको इंजेक्ट किया, ठीक है, यानी कि 2 सेशंस 2 मंथ. ये 2 मंथ के बाद आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है एक्नी में. और कोई अदर ट्रीटमेंट यूज़ नहीं कर रहा था पेशेंट. हेयर लॉस, very significant results. 54-year-old male with alopecia, androgenetic alopecia. Again, RSC derived exosomes, rose stem cell derived exosomes at session 0, 3, 6, 12 and 3 months. ये देखिए आप कितना. ये बेसिकली करते ये हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में तो हम सिर्फ फॉलिकल्स को निकाल के वापस डाल देते हैं ना, या PRP